Morning students. Today we are going to discuss some basic definitions to understand EMF, internal resistance of a cell, as well as terminal potential difference. To understand these three things, these are the three important characteristics of a cell. Before going to this EMF, internal resistance and terminal potential difference, let us go for some basic definitions. Which are the basic definitions? Let us see cell. What is cell? You have seen in physics what is meant by cell. In the language of physics, what is cell? It is a device used to maintain a constant potential difference. What purpose we are using cell? The basic thing we are using the cell is to maintain potential difference. The basic purpose. What is the basic purpose of using the cell? It is a device used to maintain a constant potential difference. Cell mainly हम किसके लिए यूज करते हैं? Cell we are using to maintain a constant potential difference and hence steady current. When we are maintaining potential difference constant means current is also constant. Steady current. What is meant by steady current? The value of current should not change. The magnitude of current should not change. That type of current we call steady current. That type of current what we call steady current. So this is a cell. It is a device used to maintain a constant potential difference. You can see the cell. Mainly these things are the cell. This is what cell. This is a positive. Okay. This is a positive. We call it as positive and this one is negative. इसको हम क्या बोलते हैं? Cell बोलते हैं. ये positive terminal है. ये negative terminal है. In which we are converting chemical energy into electrical energy. In this thing we are converting chemical energy into electrical energy. इसमें क्या convert हो रहा? We are converting chemical energy into electrical energy. We have positive terminal, we have negative terminal. In this case we are converting chemical energy into electrical energy. Cell. What purpose we are using cell? The cell we are using to maintain a constant potential difference. What purpose we are using cell? The cell mainly we are using to maintain a constant potential difference. Okay. After that, battery. What is battery? See, in a remote control, in TV remote control, you might have observed that you will put one cell or minimum 2 cells or 3 cells. That depends upon remote control. In a remote control, you are using 2 cells. Can you say the combination of cells as a cells or battery? Battery means combination of cells which is used to maintain a constant potential difference. Where the remote control is a circuit, the TV is also a circuit. In that case we are using these cells in series. Plus minus दूसरे और एक सेल का क्या रहता है? इसका प्लस माइनस दूसरे का सेल का प्लस फिर माइनस, ऐसा प्लस माइनस. सो यहाँ पे क्या है? सेल्स आर इन सीरीज. तो cells, combination of cells we call battery. Remote control. Many toys you might have seen. In those toys you might have observed that you are using more than 2 cells. How many cells you are using? More than 2 cells. बहुत सारे cells, more than 2 cells, 3 cells, 4 cells भी use कर सकते हैं. वहाँ पे cell नहीं बोलना, वहाँ पे battery बोलना. So battery is a combination of cells. What is the difference between cell and battery? Cell बोले तो एक ही रहता, plus minus. When you are using more than one cell, then at the time you can say the combination is called as battery. So what is battery? A combination of cells is called battery, which is maintains a constant potential difference between its 2 terminals, which maintains PD. What is PD? Potential difference. Now what is electrolytic cell? An electrolytic cell is a simple device used to maintain a steady current in an electric circuit. We have positive electrode, we have negative electrode. Electrolytic cell में mainly कितने terminals रहते हैं? 2 terminals रहते हैं. We have positive electrode, we have negative electrode. In short we call terminals. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन a steady current in an electric circuit. What is meant by steady current? The magnitude of current should not change. What is meant by steady current? The magnitude of current should not change. That kind of current we call steady current, and this kind of current we are getting from wishing electrolytic cell. So this is what electrolytic cell. In this case what happens? Chemical energy get converted into electrical energy. यहाँ पे क्या हो रहा है? Chemical energy get converted into electrical. Electrolytic cell बोले तो आपको ये ड्राई सेल हुआ. This is a dry cell. Electrolytic cell बोले तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं. वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं? कंटेनर लेते हैं. वी आर टेकिंग वन कंटेनर
we are taking one container, in that we are filling solution, electrolytic substance. This is one, this is another. We have, this is positive electrode, we have negative electrode. ऐसे इसको सेटअप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेनली मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. दिस इज अ ड्राई सेल. आप जो देख रहे हैं ये ड्राई सेल है. इन दिस केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? मेनली यू कैन यूज इलेक्ट्रोलाइट्स. वहां पे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वहां पे यूज करते हैं. In this electrolyte substance, we have positive electrode, negative electrode. In this case, we have positive electrode as well as negative electrode. What is the electrolytic cell? An electrolytic cell is a simple device used to maintain a steady current. What is the main use of electrolytic cell? The main use of electrolytic cell is used to maintain a steady current in a circuit. The magnitude of current should not change. Okay, this is positive electrode, this is negative electrode. Now after that we are coming across open circuit and closed circuit. What is meant by open circuit? When we are not drawing any current in the circuit from a cell. सेल से हम कोई भी करंट उससे ड्रॉ नहीं कर रहे, उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मीन्स जस्ट लाइक ऑफ. ओपन मीन्स ऑफ, closed means on. What is open circuit? The cell is said to be in open if no current is drawn from the cell. If the cell is said to be in open circuit if no current is drawn from the cell. ये सेल को ओपन सर्किट कब बोल सकते हैं? The cell is said to be in open circuit if no current is drawn from the cell. अब सेल को ओपन सर्किट कब बोल सकते हैं? The cell is said to be in open circuit if no current is drawn from the cell. वो सेल से करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे तब उसको क्या बोलते हैं? A cell is in open circuit. Now see, are you seeing any connections here? पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शंस है या नहीं है? नहीं है. दिस मीन्स राइट नाउ द शेल इज इन ओपन सर्किट और क्लोज्ड. राइट नाउ ये ओपन है या क्लोज्ड है? वेदर वी आर ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम दिस सेल, कनेक्शन करे क्या? नहीं करे. व्हेन वी कनेक्टेड देन ओनली यू प्रोवाइड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट करंट. अभी यहां से करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे. दिस मीन्स I value is 0. This means capital I value is 0. This is open circuit. What is open circuit? We are not drawing any current from the cell. We are not drawing any current from the cell. That's why we call it as open circuit. Here capital I value is 0. यहाँ पे connections दे नहीं दे, खाली है यहाँ पे. See, this is plus minus. यहाँ पे connections है क्या? नहीं है. We are not drawing any current from the circuit. We are not drawing any current from the circuit. That thing we call open circuit. What is a closed circuit? When we connected the shell in the circuit, just like resistance, हम क्या करें? ये shell को एक resistance को connect करें and we used one wire. This is the shell. This is the shell. We have positive terminal, we have negative terminal, and how much current flows through this circuit? I, and we connected some external resistance R. तो ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. We connected on path. यहाँ पे path था क्या? यहाँ पे करंट ड्रॉ करे नहीं ड्रॉ करे. यहाँ पे ओपन सर्किट था. यहाँ पे क्या है? ऑन है. दिस इज ऑन. ये बंद है, ऑफ, एंड दिस इज ऑन. द सेल इज सेड टू बी इन ए क्लोज्ड सर्किट इफ द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा. यहाँ पे आई वैल्यू क्या था? 0 था. हियर आई वैल्यू इज 0. आई वैल्यू इज 0. आर वैल्यू इज इंफिनिटी. स्विच ऑफ बटन स्विच ऑफ करें हम. बटन स्विच ऑफ करें बोले तो क्या होता? आर वैल्यू इज इंफिनिटी, आई वैल्यू इज 0. Whenever you switch off it, R value is infinity, I value is 0. Closed circuit means what? Closed circuit means some I is there. R value is finite. R value is finite and I value is not equal to 0. Closed circuit means on. बटन फैन में बटन जो ऑफ करते बोले तो वहां पे करंट फ्लो होता नहीं होता. इसका मतलब क्या है? ओपन सर्किट. When fan is running means you switched on it. Switched on position में क्या रहता? Closed circuit. Some current is flowing through the circuit. The cell is said to be in a closed circuit if the current is drawn from the cell. The cell is said to be in a closed circuit if the current is drawn from the cell. सेल से करंट जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं तब उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट. एंड दिस इज अ थिंग. यहाँ पे देखो खाली शेल है, कनेक्शंस नहीं है, तो यहाँ पे करंट वहां पे 0 है. करंट हम ड्रॉ नहीं करें. ये शेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक कनेक्टिंग पाथ वायर यूज करें. Which is the connection purpose we are using wire. Through this wire how much is the current flowing? I. Through this wire how much is the current flowing? I. So here we are drawing some current from the cell. Cell से थोड़ा बहुत करंट हम क्या कर रहे?
ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज विच सर्क्यूट? क्लोज्ड सर्क्यूट. तो इन रफ वे यू हैव टू रिमेंबर ओपन मीन्स ऑफ, closed means on switch. Open circuit means R value is infinity, I value is 0. Closed switch means R value is finite and I value is not equal to 0. Some current is there. Some current we are drawing from the cell. That kind of circuit we are calling closed circuit. Rough way में इतना याद रखो. Open बोले तो off, closed बोले तो on. Next, moving to electromotive force of a cell. Moving to the next thing, electromotive force of a cell, or in short we can say EMF. In short में हम क्या बोलते हैं? EMF. There are basic two characteristics of a cell. Cell के दो characteristics है. This is a cell. This is a cell. Cell is identified by. There are two characteristic properties. जब स्टूडेंट है बोले तो स्टूडेंट को हम कैसा पहचानते हैं? आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म देखते हैं. Any student, that particular student belongs to which college? How can we identify? We can identify by seeing his uniform, and second thing is ID. Similarly, the cell is characterized by. Similarly, the cell is characterized by two important properties. The first one is EMF of a cell, electromotive force of a cell, EMF. What is EMF? Electromotive force of a cell. Second one is internal resistance of a cell. All the cells they have EMF as well as internal resistance of a cell. उसके पास EMF भी है, internal resistance of a cell है. राइट नाउ इसको मैं कनेक्शन नहीं करे तो यहाँ पे क्या है? ओपन सर्क्यूट है. जब मैं इसको कनेक्शन करे सम करंट इज फ्लोइंग, तब उसको क्या होता? क्लोज सर्क्यूट. सो ये रिमोट कंट्रोल में है. आप रिमोट कंट्रोल में क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ 3 shells व्हेन यू यूज 2 shells, करंट इज फ्लोइंग और नॉट फ्लोइंग? नॉट फ्लोइंग. एट द टाइम यू कैन से ओपन सर्क्यूट. At the time you can say open circuit. Now all the 3 shells you put in a proper order, then current is flowing, then remote will operate. At the time you can say it is a closed circuit. Open circuit, I value is 0, no current we are drawing from the cell. Closed circuit means some current we are drawing from the cell. That thing we can say closed circuit. Now how to understand electromotive force of a cell or EMF of a cell? What is EMF? Electromotive force of a cell. Electromotive force of a cell, in short we can say EMF of a cell. Short में क्या बोलते हैं हम उसको? EMF of a cell, and the symbol is E, like this. Not straight E, curve E. Not straight E, ऐसा curve E. Curve E दिख रहा है आपको? ये straight E नहीं है, तो थोड़ा curve आया. You see, just like curve. Curve E, cursive है बोलते हो. Cursive E है ये, curve E. Okay, EMF of a cell is represented by E. What is EMF? Electromotive force. How to understand electromotive force? How to understand electromotive force? Before seeing, see, this is one battery. Okay, this is plus, this is minus. This is a resistance R. How much is the current flowing? I. Here also how much is current? Same current, enter same current. Come this side, I. Now I want to carry 1 unit positive charge. What is unit positive charge? 1 coulomb. This 1 coulomb plus 1 coulomb, I will start from this point, this point, this point. I want to circle completely. I want to transfer this charge to entire circuit. ये 1 coulomb को मैं पूरा सर्क्यूट में जो है राउंड डालना चाहता हूँ. उसके लिए जो भी एनर्जी लगता है, that energy or work done is nothing but EMF of a cell. What is EMF of a cell? The EMF of a cell is defined as the work done or energy supplied by the cell in transferring or in carrying a unit positive charge once around the complete circuit in which it is connected. बहुत सिंपल है. देखो ये सर्क्यूट डायग्राम है. सर्क्यूट डायग्राम बोले तो एक बैटरी है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ओके, now how much is current flowing? I. Now I will take unit positive charge. What is meant by unit positive charge? 1 coulomb plus 1 coulomb. I want to transfer this plus 1 coulomb through entire circuit. Complete circuit में मैं उसको घुमाना चाहते हैं. I want to transfer a unit positive charge once around the complete circuit. इसको एक राउंड डालना चाहते हैं. उसको जो भी राउंड डालना चाहते हैं अपने आप तो नहीं जाता. उसके लिए हम कुछ वर्क करना. We have to supply some energy. We have to do some work. Whatever amount of energy we are supplying, whatever amount of work is done, that is nothing but EMF of a cell. What is EMF of a cell? The EMF of a cell is defined as work done or energy supplied by the cell in transferring a unit positive charge. In transferring unit positive means plus 1 coulomb. Unit positive means plus 1 coulomb once around the complete circuit in which it is connected. बहुत सिंपल है. एक सर्क्यूट डायग्राम है. हम 1 coulomb को एक 1 राउंड उसको डाल के जो है
लेके जाना चाहते हैं, अपने आप तो नहीं जाता, ये अपने आप तो नहीं जाता, हम उसको क्या करना, एनर्जी सप्लाई करना. हु इज सप्लाइंग एनर्जी? द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल. हियर केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Here there is a conversion of one form of energy into another form of. The energy is supplied by the cell to transfer, to carry a unit positive charge once round the complete circuit. वो सर्क्यूट में कंप्लीट एक राउंड डालने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई करते हैं कौन, सेल, उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल. हाउ टू अंडरस्टैंड ईएमएफ ऑफ ए सेल? द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्क्यूट. एक कंप्लीट राउंड में जो भी हम फेरे डालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं कौन करते हैं, सेल. This means there is a conversion of one form of energy into another. Here chemical energy get converted into electrical energy. Here chemical energy get converted into electrical energy. Very simple thing. You see यहाँ पे क्या हो रहा है, chemical energy get converted into electrical energy. How? See, एक सर्क्यूट डायग्राम है. This is plus, this is minus. Okay, this is external resistance R. Now I want to carry, this is plus, this is minus. I want to carry plus 1 coulomb entire complete circuit. I want to transfer, I want to carry unit positive charge throughout this circuit. मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस सर्क्यूट में पूरा जो है ट्रांसफर करना चाहता हूँ, पूरा इसमें रोट घुमाना चाहता हूँ मैं. उसके लिए जो भी एनर्जी लगता है वो एनर्जी कौन सप्लाई करते हैं, सेल. Means here chemical energy get converted into electrical energy. This is nothing but EMF of a cell. What is EMF of a cell? EMF of a cell is defined as the work done or energy supplied by the cell in transferring unit positive charge once round the complete circuit is called EMF of a cell. This is one definition. What is second definition? Now you can see here current is how much? You can see there is a positive terminal, this is negative terminal, or else you can say positive electrode or negative electrode if you are taking electrolytic cell. अगर आप ड्राई सेल लिए बोले तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. व्हेन यू टेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इफ यू टेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन यू कैन से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, हाउ मच इज आई वैल्यू? आई वैल्यू इज 0. व्हाई आई वैल्यू इज 0? आर यू ड्रॉइंग एनी करंट और यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट? यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट. कनेक्शन है क्या इसमें? एक्सटर्नल सर्क्यूट के साथ कनेक्शन करे क्या, खाली फ्री है, शेल वहां पे फ्री है, उसको सर्क्यूट में एक्चुअल कनेक्शन करे, नहीं करे. व्हेन यू आर नॉट कनेक्टिंग इन अ सर्क्यूट, हाउ मच इज करंट फ्लोइंग थ्रू दैट? 0. वी आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल. सेल से हम क्या भी काम नहीं ले रहे, शेल से हम क्या भी काम नहीं ले रहे. इसका मतलब आई वैल्यू इज 0. दिस मींस इट इज ओपन सर्क्यूट और क्लोज्ड सर्क्यूट. ओपन सर्क्यूट. This circuit, open circuit. We are not drawing any current from the shell. EMF of a cell is defined as the potential difference between the positive and negative electrodes of the cell when the cell is in open circuit. Okay, what is EMF? EMF का दूसरा definition भी क्या है? Potential difference between positive electrode and negative electrode. What is another definition of EMF? Second definition. पहले वर्क डन के बारे में हुआ, दूसरा definition. ये एग्जाम में ये आप लिखे तो अच्छा रहता 1 मार्क्स के लिए. This thing you can write. What is another definition? Second definition is very simple. The PED. What is PED? Potential difference between positive electrode and negative electrode when we are not drawing any current from the cell. Means when the cell is in open state. When the cell is in open circuit. EMF of a cell is defined as the potential difference between the positive and negative electrodes of a cell when the cell is in open circuit. Means we are not drawing any current from the cell. Right now, is it open or closed? Open. इसको प्रॉपर सर्क्यूट में कनेक्शन करें तो इससे हम करंट ड्रॉ कर सकते हैं. अभी इससे करंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते. करंट ड्रॉ करना बोले तो क्या करना, इसको वायर कनेक्शन देना. इसको वायर कनेक्शन दे तो ही करंट हम इससे ड्रॉ कर सकते. राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट कंडीशन whether we are able to draw any current from this battery or cell. ये सेल से हम करंट ड्रॉ करने के लिए हमारे को पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है. मार्केट में आप डायरेक्टली शेल लाते हैं, वहां से आपको करंट ड्रॉ करने नहीं आते. आपको करंट ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको रिमोट कंट्रोल में इंसर्ट करते हैं. मोमेंट यू इंसर्ट द सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वी कॉल बैटरी, एट द टाइम यू आर सक्सेसफुल इन ड्रॉइंग ए करंट. बिफोर यू आर नॉट सक्सेसफुल. वहां पे खुला रहते हैं, तब ओपन रहते हैं. अभी इसको पाथ नहीं है, इसको कनेक्शंस नहीं है बोले तो यहाँ पे आई वैल्यू क्या है, 0. देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्क्यूट.
That is nothing but EMF. What is EMF? Second definition of EMF, the potential difference between positive electrode and negative electrode when the cell is in open circuit. When the cell is in open circuit, that potential difference we call EMF of a cell, and the SI unit of EMF of a cell is volt. The SI unit of EMF of a cell is volt. This thing you have to remember. The SI unit of EMF is volt or joule per coulomb. Why joule per coulomb? EMF का definition क्या है? W by Q. ये कितना होता है? 1 joule. Unit positive charge बोले तो 1 coulomb. That's why what is the unit of joule per coulomb? Volt. Joule per coulomb is nothing but volt. How can you say definition of 1 volt? How can you say EMF of 1 volt? EMF of 1 volt होना बोले तो वर्क डन कितना होना? 1 joule होना to transfer unit positive charge. How to define EMF of 1 volt? How to define EMF of 1 volt? To say EMF of 1 volt, we have to supply energy or work done. How much? 1 joule to transfer a unit positive charge once around a complete circuit. We have to supply 1 joule of energy or 1 joule of work is done in transferring a unit positive charge once around a complete cell. Then we can say EMF of cell is 1 volt. EMF of a cell 1 volt होना बोले तो W कितना रहना? 1 joule रहना. Work done is 1 joule or energy supplied is 1 joule. Work done or energy spent, meaning is same. Work done is 1 joule and Q कितना रहता है? Unit positive charge बोले तो 1 coulomb. 1 joule per coulomb is nothing but 1 volt. What is the SI unit of EMF of a cell? The SI unit of a EMF of a cell is volt, is nothing but joule per coulomb. Volt is nothing but joule per coulomb. Volt का दूसरा क्या है नाम? Joule per coulomb. Okay. What is EMF of a cell? EMF of a cell is measured in volt. SI unit is volt or joule per coulomb. How to define EMF of a cell is said to be 1 volt? If amount of work done or energy spent at the rate of 1 joule in transferring unit positive charge completely throughout the circuit. एक को राउंड डालने के लिए कंप्लीट सर्क्यूट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को राउंड ट्रांसफर करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क करे तो तब जाके तुम क्या बोल सकते हैं? EMF of a cell is said to be 1 volt. Okay, fine. Now, what is the EMF of a cell depends upon which factor? नीट और JW. ये इसमें बुक्स में नहीं है लेकिन हमारे को पढ़ना बहुत जरूरी है. EMF of a cell depends on nature of the electrolyte of the solution, nature of the electrodes. EMF of a cell depends upon the first thing, nature of the electrolytic solution. Nature of the electrolytic solution. ये कंटेनर है, ये क्या रहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इसमें पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड. EMF of a cell depends on nature of the electrolytic substance. Nature of the electrolytic substance, whether it is concentrated, whether it is diluted, that decides EMF of a electrolytic cell. EMF of a electrolytic cell depends on nature of the electrolytic substance, whether it is concentrated or diluted. And second thing, nature of the electrodes. कौन से मेटल से बने हुए? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वेदर द इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर, वेदर द इलेक्ट्रोड्स आर आयरन. कौन से मेटल यूज करे वो इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, वो डिसाइड करते हैं EMF ऑफ सेल कितना है. सो EMF ऑफ ए सेल मेनली डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. Nature of the electrolytic solution, whether it is concentrated or diluted, that decides EMF of a cell. And second thing, nature of the electrodes. What is meant by nature of electrode? Which metal we used, whether we used silver, whether we used gold, whether we used copper, whether we used iron, because gold is a good conductor, okay, and hence we will get more values also. So EMF of a cell is decided by mainly 2 factors. EMF of a cell is mainly divided by how many factors? 2 factors. The first factor is what? Tell me, the first factor is what? First factor is the nature of the electrolyte and nature of the electrodes, which metal we are made. Next, EMF of a cell is independent of quantity of electrolyte. वो half liter है और 1 liter है या 1/4 liter है, that is not decides EMF of a cell. Quantity of electrolyte will not decide the EMF of a cell. The size of the electrodes also will not decide the EMF of a cell. The distance between, यहाँ पे जो भी distance है, this D will not decide the EMF value. The heights will also not decide the EMF value. The quantity of the electrolyte substance will also not decide the EMF of a cell. Means these are the factors on which EMF cell independent.
Okay, EMF of a cell depends on nature of the electrolyte and nature of the electrodes. It is independent of quantity of electrolytes. It is independent of distance between electrodes and size of the electrodes. Okay, thank you.